Good morning, one and all. I welcome you all to the session 1, day 5 of this 5-day FTP. The expert of the session is Dr. Rahul Deshmukh, Associate Professor and Head with Pharmaceutical Department. Good morning, sir. I, Engineer Sunita Kotwal, Assistant Professor, on behalf of Civil Engineering Department, GZS CCT, MRS PTU Batinda, welcome you to the session 1, day 5 of this 5-day faculty development program, being organized by Civil Engineering Department with the guidance from Atal Academy. Let me first take the privilege to introduce Dr. Deshmukh with you all. Dr. Rahul Deshmukh is working as Associate Professor and Head at the Department of Pharmaceutical Science and Technology, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University, Batinda, Punjab. Dr. Deshmukh did his M.Pharma from JGS College of Pharmacy, Ooty, Tamil Nadu, and completed his doctoral degree under Professor Manjeet Singh and Professor P.L. Sharma from Punjab Technical University, Jalandhar, Punjab. Dr. Deshmukh has 17 years of teaching and research experience in the field of pharmacology. His research area is focused on understanding of neurobiology of cognitive and movement disorders and to explore novel therapeutic strategies. He has guided more than 40 M.Pharma students for their research thesis and currently 2 doctoral fellows carrying out their research under his supervision. Dr. Deshmukh has 2 patents and published more than 69 research and review articles in internationally peered reviewed journals and also published 4 books and 15 book chapters, out of which one is an international book with Springer named as Animal Models of Neurological Disorders. He has been awarded with various international travel grants and is a recipient of Professor Manjeet Singh Oratin Award for his research presentation at the 49th Annual Conference of Indian Pharmacological Science in December 2016. Dr. Deshmukh fetched several research grants from funding agencies of the Government of India and designed and conducted research projects funded by industries. He serves as an expert consultant for industries and editorial board as expert in review panel for various reputed journals in the field of neuroscience and pharmacology. You are most welcome, sir, to the session 1, 5-day of this 5-day FDP. Now I would like to request Dr. Deshmukh to please start with his lecture on biomedical waste and its management. Over to sir. Thank you. Thank you for such a wonderful introduction of mine. First of all, let me clear, my voice is audible? Yes, sir. My voice is clearly audible? Yes, sir. Very clear. Okay. Thank you, madam, for such a nice introduction. And I appreciate the efforts taken by the organizing committee for such a important cause, that is waste management, is highly appreciated in India especially, and it is being ignored since many years, and now it is being taken up as a major initiative in India to as a Clean India mission of our Prime Minister. Thank you very much, and I also say good morning to all the delegates who are attending this 5-day FDP program. So I begin with the talk here without wasting much time. Madam, my slides are visible? Yes, sir, they are about to present. Yes, sir, they are visible. Okay.
Can I start now? सर फुल व्यू कर लीजिए प्लीज. Okay, I will try. जी सर. Now it's okay? Okay. वेरी राइट. Okay. So, as per the theme of this FDP, the talk of today is biomedical waste management. So, everybody knows that waste management is highly appreciated in India, and it is a need of hour where most of the waste materials are dumped and they are not being taken care of regularly. So, but the waste are different. So here we are talking about the biomedical waste, which is being uh, uh, should be taken care. Otherwise, it can affect many lives surrounding them. So myself, Dr. Rahul Deshmukh, as introduced. Currently, we are in Department of Pharmaceutical Sciences and Technology. So we will first understand what is the biomedical waste or the waste materials which are available. Waste, that is something which cannot be useful or can be put into the proper usage at a given time. There are different sort of waste material which are available, including solid waste, liquid waste, gaseous waste. And in case of solid waste, there are household waste, industrial waste, biomedical waste, etc. They do have the further categories also, but we are more concerned towards the biomedical waste for the today's talk. So, what is biomedical waste? Anything which is came out from the laboratory, which is meant for the research, like generated during diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals, or in research activities pertaining thereto, or in the production or testing of the biological samples. So, research can be focused towards two different, with the same goal that something has to be there for curing or preventing the disorder or a disease. So, disease, that is a discomfort. Now, to do this, the research laboratories are working regularly, and similarly, the clinically doctors are practicing through their surgeries and all, where they have lots of waste being generated during their procedures, and these need to be treated well. So, anything which came out from the laboratory, research laboratory, or from the clinical side is considered to be a biomedical waste. So, what are the causes of biomedical waste? Now, you can see in the picture clearly how these biomedical wastes are currently treated, though there are set guidelines, but still these are being thrown out of the hospitals and they are not being properly cared of. So, improper packaging, segregation, treatment, and disposal of biomedical waste are the causes for the biomedical waste hazards. So, how we can classify this biomedical waste in detail? There are different categories. First is infectious waste, pathological waste, sharps, that is needles, knives, etc. Pharmaceutical waste, genotoxic waste. Genotoxic waste, these kind of materials which can directly affect the genetic material of any human or animal. So these are considered to be genotoxic waste. Other than this is a chemical waste, waste with high content of heavy metals and pressurized containers like aerosols or sprays, etc., and the radioactive waste. So all these comes under the biomedical waste. So if it is an infectious waste being not taken care of, then it can spread the infection nearby the society. So whatever it is, as per classification, all these can be hazardous to the human beings as well as the animals. You might have seen in the Discovery Channel or otherwise, there are cows which are ingesting lots of material which is being thrown outside the hospitals or the research laboratories,
and these are the prime source of transferring the infection from the animals to the humans. So this must be avoided. So how it is being managed, we'll understand. We'll understand first all the categories of these waste, and then we'll understand how it can be managed. So first is infectious waste category, which is suspected to contain pathogens like bacteria, viruses, parasites, or fungi in sufficient quantity to cause diseases in susceptible host. Host is, it can be human or animal. And this category include cultures, stocks of infectious agents from the laboratory work, waste from the surgery on patients with infectious disease like tuberculosis or other, infected animals from the laboratories. Now these are the primary source of causing infections in the humans. So on the other side, the pathological waste consists of tissues, organs, body parts, human fetuses, and animal carcass, blood and body fluids. Now these category of pathological waste could be seen nearby to the hospitals which have the expertise in the surgery, or the research laboratories where they are carrying out the animal research. In this laboratory side, such kind of pathological waste could be available, but as per the guidelines, they need to be treated well. On the other side, it is sharps. Sharps, मैंने पहले कहा कि there are different kind of sharps which are available in the clinical practice. These are needles, scalpels, other blades, knives, then infusion sets, saws, broken glass, and nails, etc. These are could be the could harm to the humans or animals, and they can propagate the inflammatory or infectious reactions in the body. So these are also needed to be well managed. On the other side, pharmaceutical waste, which includes expired, unused, split, and contaminated pharmaceutical products, drugs, vaccines, and sera. Now, mostly once the medicines are being expired, these medicines are thrown out and they are not being taken care. So, I'm not audible? Hello? Sir, you are audible, sir. Sir, you are audible. Okay, audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. So, can I start now? It was interrupted in between? yes, sir, you can start. Okay. So, we reach to the pharmaceutical waste, where pharmaceutical products, drugs, vaccines, and sera are primary sources from where the infections can be caused, or any other than infections, it can spread the pathologies into the humans or animals. Next is genotoxic material. In the beginning itself, I have said that these are the agents which can directly harm to the human DNA or the animal DNA, and that's what they are called to be genotoxic. So how they can affect? By causing mutations, by causing teratogenic effect, that is teratogenic if the lady is pregnant, it can harm to the fetus and can kill the fetus. This is teratogenic. Other is carcinogenic properties, agents which can induce cancer in the humans or animals is said to be carcinogenic. So carcinogenic properties, it raises serious safety problems, disposal, and should be given special attention. It includes certain cytotoxic drugs, vomits, urine, or feces from the patients treated with cytotoxic drugs, chemicals, and radioactive materials. So you can see clearly in the picture
they can enter into the nucleus and can damage the DNA material. So these are called to be genotoxic waste. On the other side, it is a chemical waste, consists of discarded solid, liquid, or gaseous chemical. Chemical waste may be hazardous or non-hazardous, depending upon the nature of chemical. It is considered to be hazardous if it has at least one of the following properties. It is toxic, corrosive, flammable, reactive, and genotoxic. Now, you can see these are the pics which are taken from from the India itself. So these kind of chemicals which are being laying down that can be harmful to the society. So these also needs to be treated well. The next is waste with high content of heavy metals. It represents a subcategory of hazardous chemical waste and is usually highly toxic. It includes batteries, broken thermometer, and blood pressure gauge. These are also harmful to the humans as well as animals. Now, it is a pressurized containers. I said in the beginning itself, aerosols like compounds. Many types of gas are used in healthcare and often stored in the pressurized cylinders, cartridges, and aerosol cans. And most common gases include anesthetic gases, ethylene oxide, oxygen, and compressed air, which are highly toxic if they come in contact with the environment, and they will be contaminated and further initiate the different processes in the environment which could lead to toxic gas formation and could affect the health of the humans. So next is radioactive chemicals, which are highly dangerous and have the slow toxic effects, or it can, depending upon the rays involved, it can directly cause harm. And these include X-rays, alpha beta particles, gamma rays, emitted from the radioactive substances. Now, what are these alpha particles? Are the heavy positively charged and include protons and neutrons. They have low penetration power and are hazardous to the humans mostly when inhaled or ingested. Particles like beta particles are negatively or positively charged electrons with significant ability to penetrate human skin. They affect health through ionization of intracellular proteins and proteinaceous components, while gamma rays are electromagnetic radiations similar to X-rays, but to shorter wavelength. Their penetration power is high and lead to shielding. Lead shielding is required to reduce their toxic effects. So these are highly dangerous, and every material has their own specific guidelines to be treated well. Now, effects of biomedical waste include how it can damage, how it can cause affects the large population surrounding that area. The improper management of biological or biomedical waste causes serious environmental problems in terms of air, water, and land pollution. And so it can affect the larger population. So if it is in environment, that particular environment would be contaminated, and that will be inhaled through air itself and can cause severe damage. So you can see in the pictures that thermal plant and other most of the toxic chemicals are being dumped in the rivers, or this is the concrete jungle which is being shown, again affecting the environment. Now, there are different categories. These kind of waste, what we learned earlier, have been categorized into subsequent categories, and they do have the specific method for their disposal. Now, these particular waste has to be segregated, and accordingly, they must be handled.
So first category is human anatomical waste, which include human tissues, organs, or body parts. Category 2 is the animal waste, similar to the human anatomical waste. It also involves the organ, blood material, and other waste materials from the animals. Category 3 include microbiology and biotechnology waste, which is generated from the laboratory of cultures, stocks or specimens of live organisms, human and animal cell cultures used in research, and infectious agents from research, industrial laboratories, and waste from the production of biological toxins and devices used for transfer of these cultures. Now, though I have limited this information here, there are different sort of waste which are being generated from these kind of laboratories and could be harmful. So category 4 include waste sharps. We talked about needles, syringes, scalpels, etc. While category 5, 6, 7, 8 again are being divided here. Category 5 are the discarded medicine and cytotoxic drug. Cytotoxic, mostly the drugs which are used in cancer treatment are said to be cytotoxic. Waste comprising of outdated, contaminated, and discarded medicines. Category 6 is a solid waste. Atoms contaminated with body fluids, including cotton, dressing, soil, plaster casts, lines, bleeding, bedding, and other materials contaminated with blood. While category 7 is again a solid waste generated from disposable atoms other than waste sharps such as tubing, catheters, IV sets, etc. Category 8 is a liquid waste. This waste generated from the laboratory and washing, cleaning, housekeeping, and disinfecting activities. While category 9 again comes from microbiology and biotechnology waste from the laboratory of stocks of specimens, live organisms. But the material which is used, the media which is being used for these kind of cultures comes under category 9, while category 10 is a chemical waste which is used in production of biological chemicals, which is used in disinfecting, such as insecticides, etc. These biological waste are supposed to be managed. And what are the steps involved in management of these biological waste include survey of waste generated. We need to first identify where the waste is generated. And as you saw that there are different categories of waste which has been generated. So firstly, you need to segregate the waste material into different categories. Then collection and categorization of waste. Storage of waste should not be beyond 48 hours. Then transportation, and finally the treatment. Now, once you categorize the waste, whether it is liquid waste, solid waste, or other category, whether it is a sharp, whether it is dressing material, etc. Now, you need to code this particular waste by assigning them into different containers. Now, as per the guidelines, there are different containers used to store the material for how long it is? 48 hours. Now, there are guidelines. I said before, there are guidelines for managing this biological waste. And Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the new biomedical waste management rules in 2016 on 20th March 2016 under the Environment Protection Act 1986, and which is replaced earlier rules of 1998 and amendments made thereof. There are 4 categories of containers here. One is yellow, red, blue, and white. Now, I said before that once you segregate the waste, this segregated waste has to be assigned to a particular box, particular container.
Now these containers are yellow, red, blue, and white. Now here, what we can store in yellow, what we can store in red, blue, or white, and black. Now here, in case of yellow, we need to store human and animal anatomical waste, microbiology waste, soiled cotton, dressing, linen, and bedding, etc. Now this, if you see the container of yellow, then definitely it must contain these atoms and no other atoms should be mixed here. Now, why we need to keep this particular atom here? Since every waste has a different treatment strategy. So once you identify that this is the yellow box, it will go directly for treatment for this kind of materials. So the treatment is incineration and deep buried. Now, what is incineration? We are burning these kind of material at high degree temperature, more than 1000 degrees Celsius, and the carcass or ash will remain there. Next is red. It contains tubings, catheters, and IV sets. Same treatment could be applied here, incineration and deep brine, but the temperature could exceed up to 2000 degrees Celsius. Now, other than this is blue or white, is waste sharps, syringes, needles, scalpel blades, etc. Now, these kind of metallic components could be autoclaved at 121 degrees Celsius. This is wet heat sterilization. हमने इंसिनरेशन देखा, डीप ड्राई इंसिनरेशन जो है वो ड्राई हीट है और यहाँ पर हम वेट हीट का यूज कर रहे हैं. Autoclaving, microwaving, chemical treatment, and destruction and shredding could be done for these kind of sharp materials. Now, next is black box, discarded medicines, cytotoxic drug, incineration ash, chemical waste, etc. Now, these could be disposed in secured landfill. Now, secured landfill, whether it is a state or central government, they do designate a particular area for disposing of these kind of materials, and the agencies which are meant for collection of these materials and their treatment, they will treat and dispose of there itself in a particular land space. So these are the major four management areas, and we understood the treatment of these. Now you can see clearly segregation of biomedical waste in color code bags. First is yellow bag, it is infectious waste, bandages, cotton, body parts, and placenta. Red, infected dressing, POP cast, etc. Blue, that is gloves, syringes, and plastic waste. And other than this is cytotoxic drug, chemical waste in the black, and white contains needles and the broken glasses. Now these are managed through the different category of containers, and so that it can selectively taken up and taken care for the treatment. Now, the bags, once it is tied, it should not be reopened. You can see clearly there are different colors of bags. The same containers what we have, these could be used in the bags also. Once you collect in the container, this has to be, while transporting, this has to be again taken into the bags, and these particular bags labeled well. These chemicals or waste are having the biohazards. So if it is being spilled off somewhere, or bag is being laid somewhere, definitely it should indicate the label so that nobody can touch that. So before collecting, nobody can touch that. So hope you understood the different waste material which are available and how these could be managed. We have
in our campus a laboratory that is a particular animal house, and we had a tie-up with biomedical waste management service provider from Ludhiana. They will come and collect into these kind of bags. So we have the storage containers as specified here, and we keep the materials segregated into particular containers. They will come and easily collect the material and taken for their treatment. So what are the key messages here? First is we need to adhere strictly to the biomedical waste management guidelines while working or handling these kind of waste. Always use the protective gears like gloves, mask, etc. Immunize yourself. Why we need to immunize the particular persons who are involved in handling these kind of materials is they do have the larger chances or maximum chances of getting zoonotic infection. Now, zoonotic infections are those which are arise through the carcass of human or animal waste, and these could lead to serious life-threatening disorders. So we need to immunize these kind of persons who are involved in handling these biomedical waste. And never take shortcuts in segregation, since it can cause serious problems. Since if it is not segregated well, it will be treated in a different way, and so the purpose will not be solved. Collection, transportation, or disposal of the waste. Now, this must be taken care of. Now, take-home message: let the waste of sick not contaminate the lives of the healthy. So definitely, why we are managing, so it should not affect the healthy human beings which are around that area. So the waste has a particular way for the collection and the disposal. So if you take care for their treatment and disposal, definitely it is not able to cause any sort of harm to the nearby. So definitely this message is very important, that let the waste of the sick not contaminate the lives of healthy. Thank you very much. I hope you understood the topic. You understood the category of waste. So here we are thanking you from the Department of Pharmaceutical Sciences and Technology. Madam, I have finished up. Now I welcome the delegates. If they have the specific queries regarding these issues of categorization or biomedical waste, they can ask me the question. Yes, participants, you can ask your query. Sir, there are questions from chat box, sir. Shall we take now? Chat box, okay. Questions are... Sir, I'm taking the questions. Sir, the first question is from Professor K.N. Vidya. Yeah. What happened to the medicine after their expiry date? Does it loses its activity? Yeah. See, every chemical drug is a chemical entity, but this why we say this as a drug? It needs to be formulated for a particular dose. Now, who will decide the dose? The pharmaceutical industry, pharmaceutical scientists. Now, they will go with highly important research that how this drug could be safe and effective. Now, once it is formulated, this formulation has its own shelf life. Now, we will specifically identify what is the particular shelf life for a drug. Now, shelf life is how long the drug remain in a same configuration, same nature and same potential. तो समझो हो सकता है कि ये 2 साल के लिए सेफ एंड इफेक्टिव है, 2 साल के बाद उसके केमिकल नेचर में ही बदलाव आ रहा है. If it is there, that shelf life is being defined. That's what company describes
that this medicine is effective only up to this date. Okay, that is a shelf life. Once the shelf life is over, the chemical automatically get degraded. So that cannot be effective more, and but may cause harm to the human body. The same drug can be harmful. So it must be discarded well through a different process. Hello. Yeah. Yes, sir. Sir, I want to know if medical means any medicine has expired. Then if we went to the like medicine any shop, so sometimes they said that yes, we are taking this back, but sometimes they are not ready to accept return it. So, sir, why they are not accepting, or is there any period of like they can return that medicine to whatever the dealers they have purchased or not? Please Yeah. throw light on that. See, the pharmacy practice in India is not so well advanced. It is being highly ignored by the government as well as the society. See here, every product which is being sold out in a medical shop has its own expiry, and this could be returned. अगर समझो आपने खरीदा नहीं वो मेडिसिन आपने खरीदी ही नहीं, even though this medicine, if it is not sold out, it will be expired. Now this medical shopkeeper has some powers to return it to the agency from where it has procured, and they will discard it. Okay. Yes. They will discard it. But here, mostly the vendors, they are not allowing to return back the medicines. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Hello. Yes, please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Sir, now the COVID situation which is going everywhere, and that is biomedical waste is generated at large. So in now newspaper and everywhere we can see that is a biomedical waste here and there also, and it is not going the process for the incineration. So what will be the impact of this biomedical waste is generated at large in the environment in coming days, sir? So why not the government has done some policy for that is the disposable of this biomedical waste? Government has already set up the policy. मैंने आपको पहले ही कहा कि already the government has their set guidelines. But now there are certain agencies or there are certain particular people who are making business out of it. So if it is a catheter, if it is a bottle which is being used on the patient, now these are recycled. These are recycled by chemical treatment. Now, though they are not highly safe, but for their own benefit, they are taking out the biomedical waste, which is again can be reused at a much better price. So that's what they are doing such kind of business. On the other side, your question is lots of biomedical waste is being generated. Definitely, it is in the newspaper, it is on the social media itself. You can have the WhatsApp videos. You can see the Facebook videos where trucks are being loaded with the biomedical waste, and the municipal corporation has to treat it as per the guidelines, but they are being thrown or lying down. Now, what could be the hazardous effect? Now, as said, that COVID is the infectious category of biomedical waste. Not just COVID, other than COVID, there are lots of biomedical waste which is infectious to the humans. And if it is not taken care well, definitely it will spread the infection to the nearby area. And from there, it can socially spread to the entire community. So it's not that if you've done a mistake, but the infectious agent won't do any kind of mistake in infecting you. I hope I answered you. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir.
Thank you. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Okay, please. What is the duration of autoclaving and what is the pressure maintained? Autoclaving is for 1 hour, 15 minutes mostly. It is the temperature range is 121 degrees Celsius. For autoclaving, it is 15 minutes since the steam is being generated and steam has the highest penetration. तो इसीलिए इसे 15 मिनट तक ही 121 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है. 15 मिनट, 21 मिनट, आधा घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द वेस्ट दैट यू आर डिस्पोजिंग. हेलो सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो बेबी को, जो किड्स को हम सिरप देते हैं, लिक्विड सिरप, उनकी एक्सपायरी डेट तो लिखी होती है 2 to 3 years. तो हम उनको कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं और हम उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं जब वो एक्सपायरी हो जाती हैं? ओके. जो पहली बात तो हमारे यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का पर्टिकुलर सेटअप नहीं बनाया गया एट द हाउस लेवल, है ना. हमारे घर में एक ही डस्टबिन होती है जहां पर हम सब कुछ डाल देते हैं. वेट, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, इट इज एवरीथिंग बीइंग थ्रोन इनटू द सिंगल डस्टबिन. मैंने आपको पहले कहा कि देयर शुड बी अ कैटेगराइजेशन फॉर चूजिंग अ राइट डस्टबिन और द डस्टबिन शुड बी कलर्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन, जो हमने गाइडलाइन में देखा कि येलो, रेड एंड ब्लू. अब ऐसा हमारे घर पे नहीं होता. हम जो भी वेस्ट जनरेट होता है यहाँ पे, वो सारा कुछ एक ही डस्टबिन में हम डंप करते हैं. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ वेस्ट विच इज बीइंग जनरेटेड हियर. बट the same thing is not true when you go to some advanced countries like even though in Taiwan, even though in Malaysia, Singapore. Not I am going far away from this place, just nearby countries like Singapore. Now they do have their waste management at the house level. अब हर घर में उन्होंने वेस्ट की कैटेगरी की हुई है और उसी तरह से उसे डिस्पोज ऑफ करना है. गवर्नमेंट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल कम एंड कलेक्ट अकॉर्डिंगली एंड विल बी डिस्पोज्ड ऑफ. नाउ योर क्वेश्चन इज, जैसे कि बेबी सिरप है, कोई भी मेडिसिन है, लिक्विड कंटेनर्स है हमारे पास. Now, these kind of syrup contain high amount of sugar and the content of the drug material. अब उनकी शेल्फ लाइफ दी गई है कि 2 to 3 years. It could be 1 year, it could be 2 years. अब ये डिपेंड करता है how you are handling it. उस पे इंस्ट्रक्शन दी होती है कि कंटेनर should be closed and cleaned. Mostly nowadays, almost 90% families are well educated. They know how to maintain it, but it is not being maintained by most of the families. कि शुगर सिरप है तो हमने कंटेनर ओपन कर दिया, कंटेनर से ले लिया, तो जो सिरप है एक्चुअली इट इज स्प्रेडिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉटल. तो दैट कुड इनवाइट द इन्वेडर्स. So sugar is essential category of media, and where the microorganisms can grow. जो पैथोजेनस है वहां पे इजीली ग्रो कर सकते हैं. तो उसकी हैंडलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए. एवरी टाइम वंस यू ओपन द बॉटल, you take out the material and close it. You can wash it again. By closing it, you can wash it again. That could be the better way. सर माय क्वेश्चन इज कि हम उसको कितना ओपन करने के बाद 1 month, 2 month, 3 month कितना टाइम यूज कर सकते हैं? हाँ, ओपन कर तो 2 years होती है, लेकिन 2 years तक वो चलता, मतलब 2 years तक मुझे नहीं लगता वो इफेक्टिव रहता है. नहीं 2 years तक इफेक्टिव नहीं होगा वो. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 months तक आपको उसे यूज करना चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट. वंस यू ओपन इट, द शेल्फ लाइफ इज, जो उसने 3 साल की शेल्फ लाइफ दी है, इट इज अ क्लोज कंटेनर. ओपन कंटेनर की शेल्फ लाइफ नहीं है वो. ठीक है, ये जरूरी है कि अगर ये कंटेनर ओपन हो चुका है तो वो प्रिफरेबली 3 महीने से ऊपर जाना नहीं चाहिए.
3 महीने के ऊपर जाना नहीं चाहिए प्रिफरेबली। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और सर वन मोर क्वेश्चन सर, जो मेडिसिन हम लोग जैसे डिस्प्रिन या कोई भी जनरल कॉम्बिप्रिन या पेन किलर जो हम घर पे यूज करते हैं, से कुछ होती हैं जो यूज करने के बाद रह जाते हैं, जैसे 3 या 4 या 5 to 6 टेबलेट्स रह गई और उनकी एक्सपायरी हो गई, तो हम हाँ उसको जी। कैसे डिस्पोज ऑफ करें? उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करें? अब इसका जो एरिया है, जो अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हैंडल नहीं करती इसे। इट कुड बी बराइड। क्या है कि हमें 1 फीट डिग करना पड़ेगा और उसमें मेडिसिन डाल के फिर उसे सील करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो सर क्या वो हमारे सॉइल को या हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेगी? नहीं, मोस्टली दीज काइंड ऑफ ड्रग्स आर बीइंग मेटाबोलाइज्ड वेल। ठीक है, जो ये रूटीन मेडिसिन है दे आर नॉट सच वेरी हार्मफुल, लाइक पैरासिटामोल, क्रोसिन या आइबुप्रोफेन, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू सर। Hello, sir. Well, yeah, please. Hello, Yes, please. sir. My question is, you have explained about the genotype of waste, and Yeah. among the genotype of waste, you have explained mutagenic, then teratogenic, and carcinogenic. Okay, sir? Yes. So my question is, what is the harm effect of the mutagenic waste on the society among the Mutagenic waste of the society. Now, see, normally mutations happen very long. It's a long process. It's not sudden. Mutations are not sudden. Generation to generation जो जीन्स है अपनी वो कैरी होनी चाहिए, स्लाइट मॉडिफिकेशन डीएनए में होनी चाहिए, और उसके बाद म्यूटेशन होगा और कुछ अलग ही जो न्यू स्पीसीज है अलग ही फॉर्म होगा। Like I will quote the examples of this belt of Punjab or mostly nearby areas. Most of the childs are suffering with neurological disorder due to certain mutations. Most of the childs are suffering with some cranial disorders due to some mutations. Now, if you see, the parental side doesn't have any kind of mutations. Parental side doesn't have any kind of abnormality. ठीक है, ना ही मदर को abnormality है, ना तो फादर को है, ना तो उसके दादा को है, ना तो दादी को है। तो बोथ पैरेंटल साइड में किसी में भी ये जेनेटिक abnormality नहीं थी। अब ये जेनेटिक abnormality कैसे आई? How the mutation happened? It could be some environmental toxins which directly interferes with the DNA. I will brief. DNA is the main component of human lives. We are here only because of DNA. We can sense, we can smell, we can do any kind of activity is only because of DNA. DNA ही generation to generation carry होता है ना? तो Yes. आप लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा। yes, sir. ये जब डीएनए बनता है, डीएनए का कंपोजिशन है ATCG, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ATCG। अब ATCG की एक सीक्वेंस है, इट कुड बी AATTCGG, इट कुड बी AATCGC, लाइकवाइज एक सीक्वेंस है। तो हमारी जो डीएनए की सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट डीएनए का, उसे हम बोलते हैं जीन। एक फ्रैगमेंट पीस ऑफ डीएनए इज अ जीन। अगर उस फ्रैगमेंट पीस की जो सीक्वेंस में अगर एक ही जगह पे टी आ गया तो इट इज म्यूटेशन। दैट मींस द जीन फंक्शन इज अल्टर्ड। अब ये अल्टरेशन कैसे होगा? डिवीजन के टाइम पे, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस वक्त अगर कोई केमिकल एक्सपोजर हो गया उसके साथ, या ड्रग एक्सपोजर हो गया, या कोई और एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, और इट इज बीइंग इनहेल्ड, नाउ दिस कुड अफेक्ट द डीएनए। अगर उसने अफेक्ट कर दिया, दिस म्यूटेशन विल बी ट्रांसफर्ड नाउ ऑनवर्ड्स। द चाइल्ड विच इज बीइंग growing now, which is being born, will be having certain mutations, and mutations could be diagnosed at early stage or later on in the adult life. Like जैकोब सिंड्रोम बोल के है, जिसमें
जो आईज है कंप्लीटली बाहर बाहर की तरफ होती है, ऐसे लगता है कि आईज बाहर की तरफ लगाई गई है ना। तो जो एक्सपेलिंग है आईज की, ये म्यूटेशन के कारण हुई है। हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? डेफिनेटली वंस इट इज अ म्यूटेशन, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन, इट ओनली बी मैनेज्ड। तो वहां पे सर्जरी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पेस जो है खाली करनी पड़ेगी और आइज को वहां पे फिट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो ये है म्यूटेजेनिक। सर मेरा नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, is there any type of radioactive material is used during the carcinogenic or cancer treatment? हाँ हाँ हाँ, the different rays are used in cancer treatment. Related to this question, what are the drawbacks or effects on the patient or the type of patient? See, मेडिसिन का एक पर्टिकुलर फंडा है, रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो। रिस्क एंड बेनिफिट, समझो द डिसीज इज लाइफ थ्रेटनिंग, है ना। ये जो पेशेंट है पर्टिकुलरली 5 साल तक जिंदा रह सकता है विदाउट ट्रीटमेंट। ओके, अब रिस्क वेरी हाई, बेनिफिट क्या है? अगर मैं उसे एक ड्रग देता हूं तो उससे उसकी 5 साल और एक्सटेंड हो सकते हैं, वो 10 साल जी सकता है। मगर उसे क्या होगा? स्किन रैशेस होंगे, उसके बाल झड़ जाएंगे, ठीक है, उसके आईब्रोज भी निकल जाएंगे। ये ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट है। हमें पता है कि ड्रग का ये साइड इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, मगर हमारा बेनिफिट क्या है? द लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 5 years। तो रिस्क इज आउटवेड टू बेनिफिट, है ना। तो बेनिफिट ज्यादा नजर आया हमें, तो वहां पर जब कोई भी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होती है, इट वर्क्स ऑन रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो। अगर समझो बेनिफिट हमें ये नजर आता है कि ये ज्यादा है, तो वी इग्नोर द साइड इफेक्ट। उसी तरह से जो कैंसर पेशेंट है, मोस्टली इफ इट इज अ बेनाइग्न कैंसर, कैंसर के 2 टाइप है, वन इज बेनाइग्न एंड अदर इज मेटास्टैटिक, मतलब वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब अगर बेनाइग्न है, एक ही जगह पे ट्यूमर है, तो उसे वहीं पे खत्म करने के लिए पर्टिकुलरली गामा रेज कैन बी यूज्ड। अब ये गामा रेज जो है, उसके लिए पहले हमारे पास एडवांस मशीनरी नहीं थी, मगर आज की डेट में इतनी एडवांस मशीनरी है कि वी कैन रेगुलेट द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, वी कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ गामा रेज इनटू द पर्टिकुलर एरिया। तो जो कैंसर सेल है उसी के साथ ही गामा रेज स्प्रेड होगी और उसे डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। नॉर्मल बॉडी सेल्स पे वो अफेक्ट नहीं करेगी, दो इट विल हैव सर्टेन अफेक्ट ऑन द नियर बाय एरिया, मगर मैक्सिमम बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है सर मेरा। या So if the patient is operated or treated for the radioactive treatment, yeah, for the if he is suffering from the bone cancer, okay, and further he has to be operated for the same thing, then is it possible to operate, or the operation will be successfully performed? Sorry, Kamlakar Nanirkar, please, could you please repeat the question? Sir, if the patient has some problem or some bone problem, and he did for the radiation therapy, okay, already used. Radiation therapy is already used, and if he has to operate on that same portion, is it possible to operate or not? Okay, with the same radiation? Yes, sir, same. Okay, now you want to repeat the radiation, that's all, है ना? Yes, sir. Okay, radiations are prescribed particularly for the cancer. अब यहाँ पे जो पहला डोज दिया गया वो डिसाइड करेगा कि सेकंड डोज कितना होगा। हम ये रिपीटेड कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। मोस्टली somebody is suffering from one of my friend was suffering from throat cancer, and he has been given thrice the radiation therapy. Okay, so that won't be a problem. यहाँ पर हमने देखना है कि
डेफिनेटली रेडिएशन थेरेपी का साइड इफेक्ट होगा, उसके बॉडी पे इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं होगा, जीरो इफेक्ट होगा, ठीक है। कैंसर सेल पे तो होगा ही होगा, मगर बॉडी पार्ट्स पे भी होगा। मगर यहाँ पे बेनिफिट क्या है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ना, इसीलिए हम उसे दोबारा भी दे सकते हैं। Thank you. Our next question is from Professor Katani Kalami. For treatment type of plants, what's the cost factor? Pardon, I am not getting the question. Sir, he is asking that what's the cost factor for the treatment type of plants that are used for this management? Sorry, Sukhdeep ji, it is typed in the chat box. Right sir, लेकिन थोड़ा scroll करके ऊपर जाना पड़ेगा सर, या फिर मैं टाइप कर देता हूँ, अभी सर chat box में। Okay, sir, the plastics can be expired. Okay, please, pardon, repeat the question, please. Yes sir, I am typing in the chat box, sir. Okay, okay. Please checking the chat box, sir. Just now I have posted. For treatment type of plants used, what is the cost? Okay, okay. Somebody want to set up the plant, treatment plant. Okay. The treatment plant could cost. It could be costing near about 70 to 80 lakh rupees. But beyond that, government permissions are highly essential. It should be certified from Environmental Agency of Government of India. Then only it will be allowed. तो ये क्लियरेंस जो लेना है, वो क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा इशू है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है, it should not be nearby to the social area, societal area. ठीक है, तो डोमेस्टिक एरिया से उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, वहां पे होना चाहिए। लैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आई एम टेकिंग आउट ऑफ लैंड कॉस्ट के अलावा मिनिमम कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज। Okay, sir. The next question just now I have posted in the chat box. That is from Professor Shankar. Yeah, PPE kit. Right, sir. Okay, it should be incineration. PPE kit cannot be reused. PPE kits cannot be reused. If my voice is audible to everybody, and these PPE kits are directly incinerated. They burn on high temperature. हेलो। Yeah, please. हाँ सर, एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि मतलब लाइक अभी जो कोरोना के जो वैक्सीन वगैरह है, सो इट इज सेड दैट इट इज ट्रायल्ड फॉर फर्स्ट स्टेज, कभी कह रहे हैं कि अभी सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। तो ये सर मतलब कैसे, कौन से इस पे मतलब स्टेजेस कैसे डिसाइड करते हैं वो लोग, कौन से स्टेज पे अभी ट्रायल है अपनी वैक्सीन? ओके, हाँ, कौन सी स्टेज पे? ऐसा है कि वैक्सीन, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट वैक्सीन? Miss Ekta Raut? Yes sir, yes sir. It's an antigen. Yes okay? sir. It's an antigen. ठीक है, तो वैक्सीन वही है कि हम स्लो और वेरी माइक्रो डोसिंग ऑफ एंटीजन इज गिवन टू द पेशेंट। Yes sir. है ना, गिवन टू द पर्सन। तो ये माइक्रो डोसिंग एंटीजन देने के बाद हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है टू जनरेट एन एंटीबॉडी, Okay. so that it could kill the antigen. Yes. है ना, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन आता है, हमारी बॉडी के पास इतनी सॉलिड मैकेनिज्म्स है कि वो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे इरेडिकेट करता है। ठीक है, Yes. अब यहां पर अगर एंटीजेनिसिटी उसकी ज्यादा हो गई और हमारी इम्यून सिस्टम फेल हो गई, तो वही एंटीजन हमें इरेडिकेट कर रहे हैं।
Okay. The same antigen could eradicate us, destroy us completely. तो यहाँ पर जब भी हम whether it is क्रोसिन की टैबलेट लो या कफ सिरप लो या कोई आप इंजेक्टेबल्स लो, हर किसी को टेस्टिंग फेज के थ्रू ही पास होके ही ह्यूमंस तक लाया जाता है. उसे बोलते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल. उसे बोलते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल. अब क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग फेजेस है. फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4. फेज 4 is directly given to the patient. ठीक है. अब फेज 0 क्या है? Very minute quantity of drug is given to identify its safety. बस ये सेफ है कि नहीं, इतना ही देखना है. उसकी इफेक्टिवनेस नहीं देखनी हमें. हमें बस इतना कंफर्म करना है कि ये दवाई देने के बाद ये सेफ है कि अनसेफ है. अब ये किसे दे रहे हैं हम? हेल्दी वॉलंटियर्स को. ये पेशेंट नहीं है, हेल्दी है. ठीक है. और जब हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये ड्रग सेफ है, तभी हम उसे आगे टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं. ओके. अब फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये क्या है? यहां पर सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी फेज 1 में, देन सेफ्टी एंड एफिकेसी, उसकी काइनेटिक्स अलग अलग देख. अब ये क्या क्या है कि बॉडी में जाने के बाद ये बॉडी के साथ कर क्या रहा है, बॉडी से ये एलिमिनेट कैसे हो रहा है, ये भी देखा जाता है. तो ये अलग अलग फेजेस होने बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मेजर कंसर्न है कि वंस इट इज इन फेज 4, अगर फेज 4 में आ गया विदाउट टेस्टिंग तो ये लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा. ठीक है. तो ये कंफर्मेशन है कि फेज 1 में लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स है, वॉलंटियर्स है. फेज 2 में थोड़े से ज्यादा है, अप टू 100 है, 200 है. फेज 3 में अप टू 1000 पेशेंट्स है. ठीक है. तो ये लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज करना बहुत जरूरी है, ताकि फेज 4 में हम डायरेक्टली पेशेंट को दे सके. Yes, sir. That's what these phases are required. Okay. Yes, sir. Thank you so much, sir. Welcome. Yes, sir. Excuse me, sir. Yeah. Yeah, sir. In addition to this, I wanted to know, for especially for COVID-19, there is a two type of test going on, like swab sample test, and another is rapid antigen test. Sir, can you please elaborate this? Yeah. test? Yeah. Okay. First is antibody test. है ना. पहली तो बात ये है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन जाता है तो हमारी कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, Okay. sir. Whenever a pathogen enters to the body in the form of antigen, our body has a mechanism to generate antibody, which will working against that antigen. So this is the first response. This antibody is of two types. One is IgG, I capital, G small, and G capital. That is IgG. And second is IgM. Yes. IgM and IgG. Difference is that IgG is immediate responder. अभी भी infection है आपको, तो वो indicate करता है. IgM, that you defended the infection. You defended the infection, but still your soldiers are awake. That is memory antibody. Okay. You already eradicated the infection, but you have IgM, which indicates a memory antibody. Now, अगर वो दोबारा infection आपको होता है, तो आपके पास already soldiers, they are already with the guns, they will shoot up the antigen. ठीक है? Yes. Yeah. Now, antibody test is fastest. Yes. Okay. It's just a chemical reaction to identify antibody. So the nose sample will be taken first in case of COVID. COVID में nose sample जो देखा जाता है वो antibody के लिए देखा जाता है. ठीक है? Which is immediate. Yes. But throat sample is through PCR. PCR is polymerase chain reaction. Okay. ठीक है? कई बार antibody test आपकी false result, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव दे सकती है. फॉल्स पॉजिटिव मतलब उस पेशेंट को एक्चुअल में इन्फेक्शन नहीं है,
मगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। फॉल्स निगेटिव, पेशेंट को इन्फेक्शन है मगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट क्या आ रही है? ही इज नॉट सफरिंग विद कोविड, नेगेटिव है ना? बट पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन which directly amplifies the DNA, copies the DNA. ठीक है? अब हमारे जो हमारा डीएनए की कॉपी और वायरस की डीएनए की कॉपी दोनों अलग है। तो वायरल डीएनए अगर वहां पे है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि वायरस तो आपकी बॉडी में है मगर उसने एंटीजेनिक रेस्पॉन्स नहीं दिखाया। ठीक है, वायरस अपनी बॉडी में एंटर कर चुका है बट इट इज नॉट स्टार्टेड इट्स बैटल। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आपकी बॉडी में भी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, है ना? तो वायरस तो आपकी बॉडी में है मगर एंटीबॉडी जनरेटेड नहीं है। इसीलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज पीसीआर, which directly interprets the availability of DNA material, viral DNA material, and then it confirms very clearly. PCR में negative reports आने के chances 0.01 है। Yes. ठीक है, PCR में negative reports नहीं almost नहीं आती, nil है, मगर फिर भी there could be a technical error and it could be 0.01. Hope you satisfied with the answer. Yes, sir. Satisfied. Thank you, sir. And another question is like, suppose we are always sometimes use like needles and syringe in our home for suppose for a veterinary purpose or for other purpose. We used to have needles and syringe. Like you have categorized this as a surf waste. Surf waste. So, sir, what is the best possible to manage it at home? See, for sharps, you need to break it. You need to break sufficiently so that it is not going to harm anybody. Okay. And best possible way is every civil hospital it is mandatory to have a tie-up with waste disposal agency. Yes, sir. Okay, so if you unfortunately collect much of the material which is sharp, okay, these you can give it to the hospital, they will manage. Okay. And sir, my last question is like you have been given in a presentation like alpha, beta and gamma rays. And I wanted to know how this rays is been emitted and which of the treatment like are these in a MRI or in a X-ray or in a like CT scan, or which part of the actually hospital it is being generated like rays, and how it is exactly differ from X-ray? Okay. Mostly when now the diagnosis mechanisms are highly organized and they are advanced, like CT scan, 3D CT scan, then MRI, positron emission tomography, that is PET scan, etc. Okay. Now in hospitals, most of 90% people know about the X-rays. Now the other rays, that is PET scan, these MRI will have higher intensity of these radiographic techniques, that is gamma rays and alpha rays. Okay. Yes, sir. But these are managed to the local area. Okay. Yes. But it is advised. Doctors also won't allow anybody, any of your companion, to go along with you inside that room. Okay? Yes, sir. Only the patient is put into the machinery and the operator will be looking from the window through the computer. Yes. Okay. So definitely this will not have much effect to the body.
since there Yes, are their intensity is kept low. The intensity Yes, of sir. the rays kept low, very low. Yep. But Yes, sir. if certain areas of India have the maximum quantity of these radioactive substances, and this kind of radioactive substances, their effects could not be identified very easily. They Yes, sir. produce long-term effects. They affect the DNA. Yes. Huh? So Okay, this sir. could be seen in the new generation. Okay, sir. Yeah. And sir, like many people used to tell me, like you should not do the CT scan for your head for means you should not do it. Many people tell me like that. How far it is true, sir? No, not like that. Not like that. See, CT scan has to pass from stringent process. You know? It has to confirm that CT scan not going to affect the patient. Okay. Then only the government will approve. Okay, sir. These normal CT scans not going to affect you much. But if you have the problem, your problem will be diagnosed well. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Welcome. Thank you. Sir, there is a question from Mr. Gurdeep Singh Bagga. He wants to know the difference between white and blue waste. Difference between? White and blue waste. Method available at household or small scale level to identify the presence of pathogens in the solid waste and liquid waste. Gurdeep Bagga, elaborate the difference between white and blue waste. No, it's not a white or blue waste itself, but it is a particular way of storing. Now, if you look at here, I will again show the slide. Now you can see white and blue. Here doesn't contain the sharps. In case of blue, my presentation is visible. Yes, sir. Yes, visible. Oh, okay. So here, in case of blue, we are keeping syringes, plastic weights, gloves, and here, in case of white, needles and cut glasses. But at a major glance, blue and white belong to the same category. To avoid, mostly these syringes are without needles. यहाँ पर sharp material है, glasses, cut glasses है, blades है, needles है. In case of white, or in case of blue, only the plastic material, rubber material, etc. Hope he got the answer. Yes, sir. Can you please sir, tell me the method to identify the pathogens also at household level or at small scale level in waste, liquid or solid waste? Definitely, you need to set up a laboratory in your house. Then only you can identify the pathogens. But the simple way is to identify the pathogen is keep a bread in your house. You will find the pathogens very easily within a week or so. Just you spray some glucose over the bread, you will find the pathogens, that is fungi, which will come and take out your bread. But pathogens are very highly, these are the microorganisms which cannot be easily seen, and they need advanced technology to visualize them, like fluorescence microscope, high resolution microscopes, and you need to create a media. Best simple way is to see the pathogen in your house is to make a syrup. जो आपका कफ सिरप होता है ना, कफ सिरप आप ब्रेड के आसपास लगा दीजिए, ठीक है? तो ब्रेड के आसपास लगा दोगे तो अपने आप वहां पर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ है वो ग्रो हो जाएगी वहां। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द पैथोजेंस, क्योंकि भगवान ने जो सबसे बढ़िया बॉडी दी है वो हमें ही दी है ना?
our immune system is very strong, and it regularly fights with the pathogens very well. तो हमें पैथोजेंस के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है. जस्ट अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इफ इट इज अ ट्यूबरकुलर पेशेंट, अगर आपको आइडेंटिफाई होता है कोई ट्यूबरकुलर पेशेंट है, तो डेफिनेटली उसके साथ बातें नहीं करनी चाहिए, है ना. सिंस ट्यूबरकुलर पैथोजन इज नॉट सो गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, है ना, तो उस केस में हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए. बट अदर पैथोजेंस आर नॉट सो डेंजरस, वेल मैनेज्ड. Thank you, sir. Thank you so much. Welcome. Okay, lots of questions. Sir, one more question. Okay, Ruby Rani. Okay, yeah, please. Sir, this is not related to today's presentation. This is my personal question regarding COVID. Okay. Yes, please. सर, आप फार्मेसी प्रोफेशन से हैं, इसीलिए सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ. सर, जैसे अगर हम कोविड का सैंपल देते हैं और वो पॉजिटिव आता है, तो उसके 14 डेज और 17 डेज के बाद हमें दोबारा से टेस्ट रिपीट करवाना चाहिए या नहीं? कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, है ना. अगर 14 डेज तक आपने उसे क्योंकि अकॉर्डिंग टू ICMR गाइडलाइंस वो नहीं करते हैं. बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ने उसे इरेडिकेट किया है. हाँ, अब अगर आप टेस्ट करोगे तो क्या होगा? योर रिपोर्ट विल बी नेगेटिव. इफ यू गो फॉर एंटीबॉडी, योर एंटीबॉडीज विल बी देयर, है ना. एंटीबॉडी वहां पे दिखाई देंगे. IgM एंटीबॉडी आप करोगे तो ऑलरेडी वो शो करेगा कि यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय कोविड, बट नाउ इट डजंट अफेक्ट यू. सो कोविड से इतनी डरने की बात नहीं है. ऑलमोस्ट ICMR भी आपने न्यूज चैनल में भी सुना है. मीडिया ने एक पैनिक क्रिएट किया है ना, कि कोविड, और उस पैनिक में आज की डेट में सोसाइटी भी एक दूसरे को हेल्प करने को तैयार नहीं है. ठीक है. हाउ इट इज अफेक्टिंग? यस सर, इवन डॉक्टर्स भी नहीं कोविड पेशेंट के पास जाते हैं. बिल्कुल. ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग ज्यादा हुई है. अब यहाँ पे डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी इजी इन्फेक्शन, मगर हमारी बॉडी के पास ऐसी मैकेनिज्म्स है जिसके थ्रू कोविड को भी वो फाइट कर सकता है ना. मगर हर किसी के पास नहीं है. बट यहाँ पर मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट इस कोविड के चलते हुए देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस व्हिच मीडिया डजंट शो. मेनी पर्सन्स आर बीइंग सफरिंग विद साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. Many persons, they are suffering with depression like condition. That is obsessive compulsive disorder. अब obsessive compulsion क्या है? They are keeping the sanitizer in their pocket. अगर किसी ने बात भी कर ली तो मुंह पे भी सैनिटाइजर मार लेते हो, है ना. ये इतना ऑब्सेशन है कि अगर मैंने नहीं मारा तो मुझे कोविड ही हो जाएगा, है ना. तो कोविड से बहुत लोगों को डराया हुआ है. तो ऐसी भी डरने वाली बात नहीं है. यू जस्ट कीप अ डिस्टेंस. डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड. सर, अगर इन केस किसी को कोविड हो गया और दोबारा होने के चांसेस होते हैं कि इसको दोबारा भी हो सकता है, या कितने टाइम तक नहीं हो सकता? कोविड होने के बाद दोबारा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोबारा भी हो सकता है. ठीक है. अब टाइफाइड आपने सुना होगा, है ना. मलेरिया आपने सुना होगा. तो एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन है ये, साल्मोनेला टाइफी. अगर बॉडी में इंटर कर जाए तो टाइफाइड हो जाता है ना. तो आज तो हमने ट्रीटमेंट ली, हमें बुखार आया, हमने ट्रीटमेंट ली और हमें बाद में टाइफाइड नहीं हुआ, और साल के बाद पता लगा कि फिर से टाइफाइड हुआ है. मैं सर वही टाइम आपसे पूछना चाह रही हूँ. ऐसा कोई टाइम भी है कि अगर आज हुआ है तो 4 मंथ तक नहीं होगा, या 3 मंथ तक नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा भी नहीं है. अगर समझो आपका कोविड ठीक हो गया और विद द लैक ऑफ नॉलेज अगर उस पेशेंट को लगता है कि अब तो मुझे कोविड होगा ही नहीं, एंड ही विल कीप एक्सपोजिंग टू द कोविड पेशेंट, तो डेफिनेटली उसे होगा. ठीक है.
डेफिनेटली होगा, इमीडिएट होगा, नेक्स्ट डे ही होगा। उसे 3 महीने की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत क्या है? अमाउंट ऑफ वायरस। उसे बस जरूरत है अमाउंट ऑफ वायरस। अगर उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वायरस मिल गया है तो वो फिर से रीइंफेक्ट होगा। या हेलो थैंक यू सर। वेलकम। यस उपासना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि उसको फिर से कोविड हो सकता है इन केस सर हमारी बॉडी में जो हम ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, हम ठीक हो चुके हैं, हमारी हाँ बॉडी जी। में एंटीबॉडीज आ चुके हैं, अगर हाँ। हम एक्सपोज भी करते हैं, जैसे हमारे पास चिकन पॉक्स में हमारा होता है कि हमारी बॉडी ऑलरेडी एक बार होने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप कर लेते हैं, दोबारा इंसान इन्फेक्टेड नहीं होता है, लेकिन इन केस कोविड इट इज नॉट हैपनिंग, तो सर Okay. वहां पे क्या फैक्टर काम कर रहा है? नहीं कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ। कैन आई कोट एग्जाम्पल रादर देन मेडिकल टर्म्स, है ना? Yeah. तो पाकिस्तान ने हमें 10 बार हमला किया, हर बार इंडिया जीत गया, है ना? Yes, sir. जिस दिन पाकिस्तान बॉर्डर पे एटम बॉम्ब लेके आएगा उस दिन इंडिया हार जाएगा, Okay, है okay. ना? हारेगा कि नहीं? नहीं हाँ? सर, वो डिपेंड करता है कि साहब ना ना इंडिया ना, का। Okay. यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं करता। इफ आई टेक एटम बॉम्ब इन माई हैंड, every person, every prime minister of the world will have a terror of me, Okay. है ना? जी जी जी। अगर मेरे पास उसका स्विच है तो मैं किसी भी कंट्री को हरा सकता हूँ आज की डेट में, Yes, विद sir. द साइंस ऑफ फिजिक्स, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर जैसे कि चिकन पॉक्स का एग्जांपल लिया, जी है ना? जी जी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए हम एंटीजेंस लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं फ्रॉम द बर्थ। Yeah. ओके, दैट्स व्हाट आवर बॉडी इज इम्यूनाइज्ड। Yes, sir. तो इसीलिए हमें चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होता। Yeah. ओके, ये भी 100% ट्रू नहीं है। दोज हु आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड स्टिल दे हैव चिकन पॉक्स। ओके, लेकिन सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में क्या है, जो एक बार सफर कर चुका है चिकन पॉक्स से वो नहीं होता है दोबारा उसके मैंने अंदर। मैंने आपकी बात बिल्कुल सही बोली कि नहीं होता, हाँ. मगर ये 100% ट्रू नहीं है। ओके, इन दिस कई केस ऐसे केसेस है जहां पर चिकन पॉक्स फिर से दोबारा होता है उसे। ठीक है, अब वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी, आई थिंक। हाँ, ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी, योर कॉम्प्रोमाइज, योर इम्यून कॉम्प्रोमाइज। जब आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज कर गई उसने आपको दोबारा इन्फेक्ट कर दिया। तो कोविड इज अ सिमिलर केस। कोविड से पेशेंट ठीक हो गया, उसने एंटीबॉडी जनरेट कर दी, ही इज नाउ हेल्दी। ठीक है, अगर आपका एनिमी स्ट्रांग हो गया, जिस दिन आपका एनिमी स्ट्रांग हो गया उस दिन आप हार जाओगे। ओके ओके सर। जब तक आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तब तक आपको कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, वीक हो गई, उस दिन आपको वो रीइंफेक्ट करेगा। तो इट्स बेटर टू हैव अ प्रिकॉशन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Is there any other query from any participant? Please unmute your mic and ask to Dr. Reshmi. Yes, sir. There is a question in the chat box, sir, from Mr. Navneet Singh. Okay, is lymph node tuberculosis also communicable, as you said, sir? Okay, tuberculosis is infected. Lymph node tuberculosis, lymph में कैसे आया? lungs के थ्रू ही आया। Whether it is जब उसे tuberculosis हुआ है उस पेशेंट को, तो lungs के थ्रू ही पहले आ चुका है, now it reached to lymph. Okay, still that person can infect you. So it is communicable disease. Sir, one question I want to ask.
जिस तरीके से आपने बहुत अच्छा समय क्वेश्चन भी किए और आपने बहुत सुंदर सबका रिप्लाई भी किया। तो हमें जैसे उपासना सिंह मैम ने पूछा कि डिस्कस किया, तो उससे हमने आउटपुट निकाला कि हमें अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के साथ हमें जो हम मास्क यूज की बात कर रहे हैं और सैनिटाइजर, क्या यही दो चीजें सफिशिएंट है या फिर इनके अलावा? मतलब फर्स्ट इज इम्यूनिटी, सेकंड इज मास्क एंड थर्ड इज सैनिटाइजर। ओके, इसके अलावा भी कोई चीज है? हाँ, इसके अलावा भी चीज है। तो मैं मास्क, इम्यूनिटी और डिस्टेंस, ये अलग कैटेगरी है। फर्स्ट इज बी साइकोलॉजिकली वेल, definitely you are not going to be affected, but be sure to have a safe distance while you talk, while you communicate with the people. Don't shake hands, don't gather in functions. तो जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना पहले ये जरूरी है, उसके बाद ये सेकेंडरी चीजें हैं। हाँ, इन अनअवॉइडेबल सिचुएशंस मास्क मस्ट बी गुड। कई लोग सिंगल लेयर मास्क पहनते हैं, कई लोग ट्रिपल लेयर मास्क पहनते हैं। आप अगर देखो आज यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मल्टीपल मास्क पहनते हैं। तो मास्क एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, डेफिनेटली इट इज थ्रू एयर, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। प्रिफरेबली अगर डबल लेयर्ड है तो वो सफिशिएंट है। वी डोंट नीड N95 मास्क। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो N95 मास्क पहन के घूम रहे हैं, जबकि उनको जरूरत नहीं है। इफ दे आर डायरेक्टली, दे डोंट नीड। ठीक है। दूसरी बात, द साइज ऑफ दिस कोविड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज 100 माइक्रोन, लेस देन 100 माइक्रोन, एंड द साइज ऑफ पोर्स which are available in the mask range from 600 to 800 micron. तो जो वो कोविड वाला वायरस है वो आराम से आके जाके घूम सकता है। जो मास्क है ना, वो आराम से अंदर जाके फिर बाहर आके फिर डांस करके फिर से अंदर जाके फिर वहां पे बैठ सकता है। तो नथिंग टू वरी अबाउट द मास्क और एनीथिंग। तो जो साइज है मोस्टली फ्रॉम द, आई थिंक फ्रॉम द इंजीनियर साइड, दे नो द पोर साइज एंड ऑल, है ना। बस जस्ट टू ब्रीफ यू, द माइक्रोऑर्गेनिज्म साइज इज लेस देन 100 माइक्रोन, जो आपका N95 ही रोक सकता है ना, अदरवाइज नहीं रोक सकता। मगर जनरल केस में हमें N95 की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मास्क, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का साइज है वो 100 के बियॉन्ड लेस है तो वो आपके मास्क से क्रॉस कर देगा, एकदम से आसानी से क्रॉस कर देगा। फर्स्ट इज यू आर कीपिंग अ डिस्टेंस बिटवीन व्हेन यू टॉक विद द पर्सन्स। Second is you are not directly touching the surfaces or shaking hands with the person who is infected. Then definitely this distance will not be easily crossed by the microorganism to affect you. तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि मास्क पहनना और प्रिकॉशंस लेना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, सैनिटाइजर, अब चलो मीडिया यही दिखाती, बहुत सारे लोगों को स्किन डिसऑर्डर्स होने शुरू हो गए सिंस दे आर सफरिंग विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उनको लगता है कि मैंने सैनिटाइज लगा दिया तभी मैं सेफ हूं, अदरवाइज मैं मर ही जाऊंगा। ठीक है, तो वो दिन में 100 बार स्प्रे करते रहते हैं। अल्कोहल इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो क्या करता है, आपकी स्किन से वाटर सारा निकाल लेता है ना। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है, डाउट है कि आपने ऐसे सरफेस को टच किया है जहां पे मुझे डाउट है कि भाई वहां पे कोविड का पेशेंट है, तो आपको सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत है डेफिनेटली। हाँ, बाहर से आप कोई भी मटेरियल खरीदते हो, बाजार में जाते हो, तो डेफिनेटली मैं आज भी देखता हूं कि आज जो सोसाइटी का लेवल ऑफ साइक है वो चेंज हो चुका है। आज मैंने I have thrown one of the message in the WhatsApp in the last month. There are stages of COVID. जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनकी स्टेजेस अलग है, जो नॉन इन्फेक्टेड है उनकी स्टेजेस अलग है। पहले वो बहुत केयर करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो थी
पैनिक स्टेज, जहां पे वो बहुत केयर करेंगे, हर चीज को सैनिटाइज करेंगे, हर चीज के ऊपर डाउट करेंगे, है ना। दूसरी स्टेज होगी कि डिप्रेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिप्रेशन में चले जाएंगे। और थर्ड स्टेज होगी वो देखेंगे ही नहीं कोविड है, उनको दे वोंट बॉदर अबाउट द कोविड। तो ये आज की सोसाइटी जो है थर्ड स्टेज में है, नोबडी बॉदर्स। आज आप भटिंडा में घूमते हो, किसी भी लोकल एरिया में घूमते हो, मेडिकल शॉप पे देखते हो, जो 3 महीने पहले आप देखते थे कि गोला बनाते थे, गोला बना के एक पर्सन वहां पे खड़ा है, उसके बाद 3 फीट के बाद दूसरा पेशेंट खड़ा है, आज सारे के सारे काउंटर पे है। क्या उन्हें नहीं पता कि कोविड है? उन्हें सबको पता है, बट दे रीच टू द थर्ड स्टेज नाउ, दे वोंट बॉदर, जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा। नाउ एट दैट कंडीशन दे आर रीच्ड नाउ। So, being an educated person, keep a safe distance with these kind of gatherings. जब भी आपको essential जरूरत है तभी आप जाओ। Avoid unnecessary choices of your tongue from the outside food. It must be avoided. First is your life. If you are safe, then everything will be returned back to the normal. Definitely, it needs time. Pharmaceutical industry working very hard in India and abroad. I believe the Indian scientists are very great and they will come up with the right solution for the COVID also. Okay, this is not a normal virus. Normally, virus will stay for a season. Now, this virus doesn't have a season. That's what. If it had a season, definitely it might be today we might have had the vaccine itself. मगर आज की डेट में हमारे पास वैक्सीन नहीं है, क्योंकि वायरस भी इंटेलिजेंट है, उसे ज्यादा इग्नोर ना किया जाए और हमें मौका दिया जाए कि हम वैक्सीन पहले लेके आए, उसके बाद आप डेफिनेटली शादियों में भी जा सकते हो, कहीं पे भी डांस पार्टी में भी जा सकते हो, गैदरिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। First, be vaccinated first, and then you think of the gathering. Hope I satisfied each of the questions. Yeah, Firdaus Khan. Sir, I have one question. Actually, from last 2 days, I am also assistant professor in engineering college. I was taking care of all the things. I was taking the steam, and I was regularly having hot water also. Then also I think I got affected from last 2 days. I am not feeling well. Okay. So what can be the reason behind this? Because I was having the mask also. Then I was not exposing to the crowded place also. Then also I get affected. So what can be the reason behind this? Okay. It's not though you have taken the precautions, but somewhere you are exposed to, unknowingly or knowingly. Somewhere unknowingly you are exposed to the person who is already having the load of virus. Okay. But you need not to be panicked. Panic होने की कोई जरूरत नहीं है. Just keep calm, cool. If you are having the highest troubles, then you consult your doctor. Otherwise, doctor will also suggest you some medicines. These medicines could be taken off, and be healthy through mind first from the mind. है ना? पहले यहाँ से निकाल दो कि कोविड आपको अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा आपको अफेक्ट. ठीक है? Yes, sir. Be strong. Try to breathe normally. अगर कोई प्रॉब्लम आता है, first if you are identified that you are suffering with this kind of problem, isolate yourself from your family. That is the first part you need to do, and don't use any material which will be commonly used in the family. But sir, actually, as we stay in Mumbai, here the problem is that we have 1 BHK home, and there we have one only common bathroom. So definitely, I am only staying with my husband only. My child is with my parents, but still we both are sharing one washroom only. So from there also, my husband can be affected, right?
Yeah. That's what. Though you are in the same house, but you need to keep a distance. See. Yeah, we are keeping, so we are isolated in different rooms, but then also we have a common washroom and that we have to use only, and from there it can also spread, no? Nothing to worry. You can sanitize that area. Okay. Just have the flush of phenol in that area. It will be eradicate everything there. Okay, but maximally जितना आप उसे केयर कर सकते हो वो केयर करनी जरूरी है ना? Since you are in Mumbai, if I'm right, okay? Yes, sir. Try to be healthy. Both of you can walk in the morning, early in the morning, so you will get maximum oxygen. Okay, but in Mumbai, I think no morning, no night. But right now, during the COVID situation, definitely you have the good air also there, है ना? So walk करना, be positive. Everything will be normal. Within few days, everything will be normal. Okay, sir. Definitely. Thank you so much, sir. All the best. Thank you. Sir, Professor Katami is asking that along with mask, sanitizer, and safe distance, how about the use of hard drinks? Pardon? What about the use of hard drinks, sir? Hard drinks. Hard drinks. Professor sir, very sorry, your hard drinks won't work here. Since you are not going to get 70% alcohol. Whatever the packs you take, it contains only less than 40%. So still, if you consume more of the packs, पटियाला पैक्स भी अगर लगाओगे तो आपका ब्लड कॉन्सेंट्रेशन 70% के ऊपर नहीं जाएगा, और जैसे ही 70% के ऊपर जाएगा, your health will not allow to stay you. So please, for your psychological benefit, you can have some 1 or 2 packs, but not more than that. So I hope we are done with the questions. No, sir, one more question. Yeah, please, yeah. सर, किसी भी ड्रग की डिस्कवरी में अराउंड 12 to 13 years लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वैक्सीनेशन इतनी जल्दी आ सकती है? हाँ, वैक्सीनेशन इतनी जल्दी आ सकती है. मैं आपको करेक्ट कर दूं यहाँ पे, किसी की ड्रग की डिस्कवरी के लिए not just 10 to 12 years, it requires 15 to 20 years. क्योंकि हर फेज का 15 to 20 years, 15 to 20. Yes, sir. Yes, okay? Sir, I agree. हाँ, तो मगर if I am discovering for cancer, blood cancer, अगर मैं blood cancer के लिए ट्रीटमेंट निकाल रहा हूँ, if I am my discovery is for AIDS, my discovery is for COVID, then government allow me to take my drug at the earliest possible, है ना? By avoiding certain barriers to me, है ना? तो यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग है, बेनिफिट एंड रिस्क है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी आपको फास्ट ट्रैक पे सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहन देती है. दे हेल्प अस. ओके, तो कोविड के लिए भी अगर आप 1 से 1.5 साल के समय में कोविड की वैक्सीन सारी दुनिया भर से आ जाएगी. तो गवर्नमेंट ने कोई बैरियर नहीं रखा, बस इतना ही रखा है कि देयर शुड बी द सॉलिड रिपोर्ट ऑन इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स. देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन. ठीक है, तो जैसे ही एक कंट्री में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में फ्लैश किया कि द वैक्सीन ट्रायल हैज बीन स्टॉप्ड, है ना? यस सर. उनको अगर डाउट भी आ गया कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, तो इमीडिएटली उसे बंद कर दिया जाएगा. दे विल ट्राई फॉर अ न्यू वैक्सीन. ओके. या प्लीज. सर, ये जो इंजेक्शन आ रहे हैं रेमडेसिविर के, जो मतलब पेशेंट पे ट्राई किए जा रहे हैं, कि वो सेफ है रेमडेसिविर? नो, डोंट. ये डॉक्टर की टीम डिसाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट. ठीक है, तो आई पर्सनली नॉट सजेस्ट टू टेक एनी मेडिसिन विदाउट योर नॉलेज, विदाउट द नॉलेज ऑफ अ डॉक्टर.
ठीक है? नो सर, अगर डॉक्टर कहता है कि इंजेक्शन आपको देने हैं तो वो सेफ होंगे? हाँ जी, सेफ होंगे, है ना? ठीक है सर, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना? ओके, थैंक यू। Okay, Dear participants, sorry, we cannot take further questions. We are very sorry. Sir, last question we can take from chat box, sir, from Professor Ekta Rao. Professor Ekta Rao, once the patient become normal after COVID, is there any need of isolation further? No, there is no need of isolation further, since you are already defended the virus well. And I hope, similar to COVID pandemic, I also defended lots of questions here, satisfactory to all my delegates. Thank you for giving me this beautiful opportunity to interact with the people, and hopefully I managed to solve the doubts which are raised by the delegates. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for sharing such a knowledgeable, practical and interesting lecture on biomedical waste and its management. Thanks for sparing your valuable time and sharing your best knowledge with all of us. Thank you so much, sir. Thank you. Now it's the time for tea break. We will again meet at 12 noon. Thank you so much. Okay. May I leave now? Yes, sir. Thank you so much.